So now we'll study the physical properties of ammonia. Okay, we in the previous lecture we studied the Haber's process, in which we studied that how ammonia is prepared. Okay, now we'll study that after preparation of ammonia, what is the properties of everything. Okay, what is, how does it behave, what is the physical and chemical behavior of that particular chemical. Okay, now first is what ammonia is a colorless chemical. Okay, it is not having any color in liquid form. It is like plain this thing. It is having a strong pungent and choking smell. Okay, now I told you last time that urea, which is present in the human excreta, uh, produces ammonia when it reacts with air. Okay, so urea, when it comes in contact with air, it produces ammonia, and because of which it is having a very strong and pungent smell. Okay, not pleasant at all. Taste, it is slightly bitter. Okay, why? Because it is alkaline, it is a base. Okay, physiological action, it is non poisonous obviously. इसके contact में आके कोई मर नहीं जाएगा. If inhaled, affects the respiratory system and brings tears to the eyes. Okay, it may even cause tears. It is as powerful heart stimulant and may cause death when inhaled in large quantity. Okay, so it's a heart stimulant. Okay, there are certain gases, there are certain materials which when consumed it increases the rate of heartbeat. Okay, so ammonia is one of that. ओके, इट्स अ पावरफुल हार्ट स्टिमुलेंट, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कंज्यूम कर लिया जाए, इनहेल अगर कर लिया जाए, तो हार्ट बीट इतना बढ़ जाएगा दैट इट मे लीड टू कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक. ओके, सो इन लार्ज क्वांटिटी इट इज़ वेरी डेंजरस. डेंसिटी इज हाउ मच? 8.5. इट इज लाइटर देन एयर. एयर का 14.4 है, तो इसका 8.5 है, तो 14.4 से कम है, इट इज लाइटर देन द एयर. तो ये हमेशा नीचे एक लेयर जमा हो जाएगा, ये ऊपर जाके मिक्स नहीं होगा, नीचे एक लेयर रह जाएगा. And nature is what? It is alkaline in nature. Basic. Liquefaction, it is easily liquefied at 10 degrees by compressing at 6 atmospheric pressure. Okay, not that much high pressure. And 10 degrees also somewhat attained. 10 degree तो हम लोग normal घर के refrigerator में भी हम attain कर सकते हैं, तो it is not that much difficult. Boiling point is minus 33.5, तो generally it is always existing in gaseous form, क्योंकि नेगेटिव पे ही बॉयल हो जाएगा. नॉर्मली बॉयल हम लोग गर्म करके करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव में ही बॉयल हो रहा है, तो फिर इट इज ऑलवेज एक्जिस्टिंग इन गैसियस फॉर्म. And the freezing point is minus 77.7. So if you have ammonia below 77.7 degrees Celsius negative, then you will be having ammonia in solid form, pure solid form. Okay, तो वो निकालना बहुत मुश्किल है. Okay, solubility is highly soluble in water. One volume of water dissolves 702 volumes of ammonia and at 20 degrees and 1 atmospheric pressure. ठीक है, so this is the reason why whatever ammonia, urea is produced in our body, it is excreta, it is removed in urine, which is mixed in water. ओके, तो दिस इज द रीजन वाई एक फ्लूइड टाइप का एक एक्सक्रीटा हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो अमोनिया है वो पानी में मिक्स हो सकता है. सो पीपल टेल टू ड्रिंक मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर सो दैट our excretory system works properly. Okay, next we're having fountain experiment to demonstrate the high solubility of ammonia gas in water. Fountain experiment is a red fountain experiment that we have done previously. Okay, we saw that how when this thing is ammonia gas is mixed with water, it immediately reacts, it immediately mixes up, and it leads to the formation of a basic kind of solution. Okay, जहाँ पर ammonia is dissolved in water. Okay, तो ये हम लोग देख भी चुके हैं. ठीक है, इसका अगर मैं ये बताऊं, वन सेकंड, just one sec. Now what he's going to do is introduce just a few drops of water into that flask. And since the Henry's law constant for ammonia dissolving in water is over 10,000, ammonia will rapidly dissolve in that small amount of water. What's happening now is ammonia pressure is decreasing rapidly as it dissolves. That lowering of pressure allows the atmospheric pressure to force the water from the lower flask up in the upper flask in the form of a fountain. In fact, it's a dramatic representation of the free energy release in the chemical reaction, as the free energy release can lift about a kilogram of water almost a meter high from the lower flask to the upper flask of the fountain. Okay, so this is an experiment. It denotes that how water from over here will immediately go and mix with ammonia gas, which is present inside the given beaker. ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का एक फाउंटेन मिलेगा. ठीक है, तो ये हमें ये एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि कितना easily it get mixed. A few drops of water enter the flask. Ammonia gas present in the flask get dissolved in water due to its high solubility, and this creates a partial vacuum inside the flask. Okay, so यहाँ पे we are having a dropper. Okay, that dropper is causing the change in pressure.
because of the change in pressure the water is flowing from the lower part to the higher part. ठीक है, अगर ये ड्रॉपलेट नहीं होता तो फिर यहाँ पे वाटर का ऊपर की तरफ फ्लो नहीं होता. Okay, so therefore this particular experiment shows that how ammonia is easily dissolved in water. Okay, नेक्स्ट वी आर हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया. फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने फाउंटेन एक्सपेरिमेंट भी देखे जहां पर हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि हाउ अमोनिया इज इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर. देन वी आर हैविंग केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट थर्मल डिसोसिएशन. और डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन. And if you do it with the help of heat, it is called as thermal dissociation. So if you take ammonia and if you heat it to a very high temperature, then it will get converted into nitrogen and hydrogen gases. So this is dissociation, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो गया, डिसोसिएट हो गया, एंड इट इज डन बाय हाई टेम्परेचर. ठीक है, और बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क, हेंस इट इज कॉल्ड एज थर्मल. फिर बेसिक प्रॉपर्टी. Dry ammonia is a covalent molecule. Why? Because all the bond form over here, nitrogen hydrogen bond, they are covalent bond, they are not ionic bond. Okay, so because they are covalent, they will neither be forming positive or negative ions. Okay, ions कौन बनाता है? ionic bond वाला बनाता है. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि covalent bond है तो ये ionic bond ions नहीं बनाएगा. ठीक है, so it is neutral even in the liquefied form. Its aqueous solution is weak base. If you mix it in water, aqua, the basicity is due to the lone pair of electron. Basically यहाँ पे एक lone pair of electron है. This lone pair of electron can be donated to other groups जहाँ पे electron की कमी है, because of which it becomes slightly basic. It's a weak basic. Ammonia is a very weak basic. Okay, और अगर मैं अमोनिया को पानी में मिक्स कर दूंगा, then I will get ammonium hydroxide, NH4OH. ये टाइप का मुझे एक मॉलिक्यूल मिलेगा. ठीक है, और ये पार्शियली डिसॉल्व कर लेता है. NH4OH will partially dissociate to form negative and positive ion. Okay, positive ion is ammonium and negative ion is OH minus. OH minus ion के वजह से I can say that this particular solution is basic. According to the Arrhenius theory of acids and bases, we have studied that any solution which on mixing with water which produces H plus is acid, and any solution which on mixing with water produces OH minus is basic. Now because in this case OH minus is getting produced, okay, so hence we can say that it is basic in nature. Okay, सो अभी देखो, मॉइस्ट लिटमस को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, सब बेसिक है. मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट कर देगा. फिनोल्फथालीन को कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट कर लेगा. व्हाई? बिकॉज इट इज बेसिक. सो ये सब बेस का प्रॉपर्टी है. इट इज नॉट जस्ट अबाउट अमोनिया, but if you take any base, it will have this property of changing moist litmus paper from red to blue, methyl orange from orange to yellow, and phenolphthalein from colorless to pink. Okay, next we'll study reaction with acids. Okay, अब acid के साथ एसिड एंड बेस दे रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने बहुत पहले भी देखे थे. बट बिकॉज अमोनिया गैस इन गैसियस फॉर्म इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी बेस, क्योंकि एसिड तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर वाटर फॉर्म नहीं होगा लेकिन सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा. तो NH3 plus HCl will form an ammonium salt, ammonia salt of ammonium chloride. Okay, if you take nitric acid, this is nitric acid, HNO3 is nitric acid, it will form ammonium nitrate. दोनों प्लस कर दो, दोनों को मिक्स कर दो. यहाँ पे देखो NH3 में एक और H जाएगा, NH4 हो जाएगा, और क्या बचा? NO3. that's it. If you take sulfuric acid, it will form ammonium sulfate. Now the valency of sulfuric, the sulfate group, and entire SO4 group is 2. तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें एक ग्रुप नहीं चाहिए रहेगा, हमें दो NH4 के ग्रुप चाहिए रहेंगे. This is the reason why we are taking 2 molecules of ammonia. Okay. Next, ammonium chloride is good example where two colorless gases react to form a white solid. Okay, ये कौन सा example है? Okay, let us see. तो यहाँ पे देखो अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, it will form ammonia and HCl. ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड जो दिया हुआ है, it will form nitrate and H2O. This is called a thermal decomposition. Okay, this is, sorry, thermal dissociation. Why? Because one particular molecule is getting dissociated to form two different parts, and that's it, and that is also because of heat. ठीक है. Next, this ammonia will react with water to form NH4OH. ये भी हमने पहले भी देख चुके हैं. ठीक है. So if you take ammonia aqueous, a base which is NH4OH, because ammonia पानी में जब react करेंगे, aqua जब लेंगे तो वो NH4OH ही form करेगा. तो if you take ammonious aqueous, then it is NH4OH. It is not NH3. Okay, it will react with acid HCl to form NH4Cl and water. It will react to form ammonium nitrate and water, and same ammonium sulfate and water. So this describes the neutralization reaction of acid and base reacting to form salt and water. Now in this case, in previous case we got the salt but we did not get water. Why? Because यहाँ पर OH group नहीं है. ठीक है, अमोनिया गैस को अब तक इतना स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब उसका बेसिक प्रॉपर्टी पूरी तरीके से आया नहीं है, OH प्रॉपर्टी पूरी तरीके से आया नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे we don't have an OH, but because in aqua
we have an OH over here. So in this case, we'll also get water as a byproduct. Okay, so it's a perfect example of neutralization reaction where acid and base react together to form salt and water. Okay, next reaction with soluble metal salts. Okay, soluble metal salts में क्या क्या आएगा? We will see. देखो metal, देखो यहाँ पे metal salt. So hence we are having reaction with metal salts. Now first we studied the direct reaction of ammonia with acids. Then we studied aqueous ammonia with acid, which is a perfect example of neutralization reaction. Now we'll study reaction with soluble metals. Okay, soluble metal salts. Okay, what is the meaning of soluble metal salts? Okay, soluble metal salts होता है ये वाला, जहाँ पर हम मेटल को रिएक्ट करते हैं सल्फेट से, क्लोराइड से, नाइट्रेट से, अगेन सल्फेट से. So they are all metal salts and they are soluble. You know why? Because when we mix it in water, FeSO4 जाएगा अलग अलग. FeCl3, Fe will form the positive ion, Cl will form the negative ion, PbNO3 में Pb will form the positive ion, nitrate will form the negative ion. So both of them are all of these things are soluble. They will, whenever mixed in water, they will immediately they will dissociate. Okay, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे soluble metal salts. Okay, तो ये रिएक्शन कैसा होगा तुम उसका पैटर्न समझो. When soluble metal salt is reacting with aqueous ammonia means ammonium hydroxide, क्योंकि अमोनिया हमने देखे जैसे ही पानी में मिक्स करते it will react with water to form ammonium hydroxide. So when it is reacting with aqueous ammonia, then ammonium salt is formed. This NH4 will take the salt वाला part. ये सल्फेट ले लेगा, यहाँ से क्लोराइड ले लेगा, यहाँ से नाइट्रेट ले लेगा, यहाँ से भी सल्फेट ले लेगा to form ammonium sulfate. Okay, नेक्स्ट जो OH था यहाँ पर, जो अमोनियम के साथ में था, वो चले जाएगा यहाँ पे मेटल के साथ में. ओके, टू फॉर्म मेटलिक हाइड्रोक्साइड विच इज अ प्रेसिपिटेट. वो प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब के नीचे जमा रह जाएगा. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट the functional group sulfate, nitrate, chloride, sulfate is going with ammonia, and with ammonia we are having hydroxide which is going with metal. तो क्या हो रहा है? अदला बदली हो रहा है यहाँ पे, अदला बदली. ठीक है, I need to balance the reaction definitely. जितना यहाँ पे 3 है उतना 3, यहाँ पे 2 है तो 2. You need to remember कि how this is balanced. Okay, I'll tell you different. जब यहाँ पे कभी लेक्चर लेंगे तो I will tell you कि बैलेंसिंग रिएक्शन कैसा होता है. I think हमने पहले भी एक बार किए थे. ठीक है, and one more thing is that कि यहाँ पे एक specific color होता है हर एक रिएक्शन का. This precipitate is green in color. This precipitate is reddish brown. It is white. It is white gelatinous. It is pale blue. Okay, and the NH4 solution is insoluble यहाँ पे, and in this case it is soluble. Okay, solubility in excess of NH4OH. So whatever NH4OH in this case is left, that will be insoluble and यहाँ पे soluble. So therefore this is the entire reaction का pattern. Metallic salt solution when reacting with ammonium hydroxide will form ammonium salt and metallic hydroxide. Basically अदला बदली हो रहा है functional group का. हर एक रिएक्शन का एक स्पेसिफिक कलर होगा जिसको देख के मैं बता सकता हूँ कि मैंने कौन सा मेटल लिया हूँ. यहाँ पे आयरन, लेड, जिंक, कॉपर वगैरह क्या. ठीक है, और इन सब में किसमें NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, किसमें अनसॉल्युबल है, वो भी यहाँ पर बताया गया है. ओके, सो यू कैन लुक आउट ओवर हियर टू फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया. ओके, फाइन. नेक्स्ट विल स्टडी द रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ओके, now ammonia is not a supporter of combustion. तो combustion नहीं होता, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता. It extinguishes a burnt splint and does not burn in air. It burns in oxygen with yellowish green flame. Okay, so if on one side if you are putting dry ammonia gas and if from other side if you are supplying pure oxygen, then this ammonia will react with oxygen to produce a flame. Reaction with oxygen basically means burning. तो कोई चीज जलती है तो एक flame produce होता है. So this flame is yellowish green flame. Okay, so this type of color is produced. So basically reaction क्या है? ये है reaction. Ammonia is reacting with oxygen to form nitrogen gas and water. Okay, so therefore this nitrogen gas is responsible for the formation of that particular color and flame. Okay, so this is the reaction which denotes the oxidation reaction of ammonia. ठीक है, प्रोसीजर वैसे ही अपने को दिया हुआ है. अमोनिया burns with the yellowish green flame and produces water vapor and nitrogen. It shows that ammonia contains nitrogen and hydrogen both. Okay, the reaction is irreversible and strongly exothermic. Obviously burning reaction है, burn कर रहे हैं हम लोग तो एक्सोथर्मिक तो रहेगा ही, एंड इट इज इरिवर्सिबल क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन फॉर्म हो गया, वाटर जो फॉर्म हो गया, उससे वापस अमोनिया हम नहीं निकाल सकते. फिर हमें हीट करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग अमोनिया बैक अगेन. ओके,
Fine. ठीक, let us do one more topic today. कितना बाकी रह गया? I think this is page number. This is page number what? 11. Okay. And right now we are on page number 8. हाँ तो 8 है, फिर 9, 10, 11 3 pages will be left. We'll do these three separately. अच्छा, this is important also. Catalytic oxidation of ammonia. Now we studied the oxidation of ammonia. Okay, this is the oxidation of ammonia. Okay, reaction ammonia reacting with oxygen, but this is not catalytic. Now we'll study catalytic. Because of catalyst, the reaction will happen, but it will happen at a vigorous rate, at a faster rate. In the presence of platinum metal at 800 degrees Celsius, high temperature, ammonia reacts with oxygen to give nitric oxide and water vapor. Okay, so this 800 degrees Celsius temperature, high temperature, and the platinum metal is acting as a catalyst. It will speed up the reaction. Hence, it is called as catalytic oxidation of ammonia. Understood? So what we're doing is that यहाँ पे we are passing dry oxygen and dry ammonia. ठीक है, यहाँ पे प्लैटिनम जो पाउडर है वो प्रेजेंट है और हम लोग इसको हीट भी कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, जो रिएक्शन है, दिस अमोनिया विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ओके, जो अमोनिया यहाँ से हम लोगों ने सप्लाई किए, इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन सप्लाइड फ्रॉम ओवर हियर at the presence of 800 degrees Celsius and platinum. It will form water, nitrogen oxide gas, and heat will be given out. Okay, this NO gas which is formed will immediately react with oxygen, excess of oxygen जो यहाँ से हम supply कर रहे हैं, and it will form NO2, which is a brown colored gas. And this brown colored gas will be found over here. यहाँ पे हमको brown color का हमको कुछ gas का collection यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है? So this is the reaction part. Okay, so therefore observations क्या क्या दिखेगा आपने को? First, reddish brown vapors, these brown vapors of NO2 will be observed at this particular container over here, at this flask over here. So this is the first observation. Okay, this is happening because of the oxidation of nitric oxide. Now this is nitric oxide. So nitric oxide reacts with oxygen. That is called as oxidation of nitric oxide. Okay, so this will form brown colored gases. Okay. The platinum catalyst continues to glow even after the heating is discontinued, since the catalytic oxidation of ammonia is an exothermic reaction. Now, once I stop heating this, now we know that once we heat something, it starts glowing, it starts appearing hot. ठीक है, तो जब तक हीटर चल रहा है तब तक तो प्लैटिनम ग्लो करता ही है, लेकिन हीटर मैंने बंद कर दिया, उसके बाद भी प्लैटिनम क्या हो जाता है कि ग्लो करने लगता है. व्हाई? बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इट्स अ बर्निंग रिएक्शन. तो स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने हीट की है, बट आफ्टरवर्ड्स व्हाट विल हैपन इज दैट के वो रिएक्शन के हीट से ही वो गर्म रह जाएगा. So it will keep on emitting heat, it will keep on remaining red hot. Okay, so hence this is the catalytic oxidation of ammonia. Sorry, next we'll study the reaction of carbon dioxide. So ammonia will react with carbon dioxide at 150 degrees Celsius, 150 atmospheric pressure to form urea. This is urea. Urea is found in the waste material of living things. Okay, चाहे वो human beings हो, mammals हो, reptiles हो, वगैरह कुछ भी हो. ठीक है, it's a byproduct of respiration that we do. ओके, हमारा जो किडनी होता है वो किडनी क्या करता है, हमारे ब्लड में से यूरिया निकाल देता है और गॉल ब्लैडर में वो यूरिया मिक्स होता है पानी के साथ, एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड. सो यूरिया इज अ वेरी कॉमन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फाउंड इन लिविंग थिंग्स. ओके, नेक्स्ट, अमोनिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो हाउ कैन वी यूज इट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन निकालने वाला. ओके, तो यूरिया अमोनिया कैसे ऑक्सीजन निकालेगा हम वो देखेंगे. फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड. ओके, नाउ इफ यू स्टडी ओवर हियर, कहाँ गया, एक सेकंड, जस्ट वन सेकंड, कहाँ चला गया वो? अरे हाँ, when ammonia is reacted with chlorine in excess, ammonia is in excess, sorry, ammonia बहुत ज़्यादा ले लिया और उसमें थोड़ा बहुत क्लोरीन मैंने डाल दिया, तो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस एंड HCl will be produced. Okay, fine. So this is ये. Now separately this reaction will also get carried out simultaneously. ये भी होगा और साथ में ये भी होगा, दोनों simultaneously होंगे, दोनों एक साथ होंगे. 6 molecules of ammonia will react with 6 molecules of HCl. HCl formed from over here, and it will form 6 molecules of ammonium chloride, NH4Cl. So we write these two reactions साथ में. ये RHS का 6HCl cancel हो जाएगा left hand side के 6HCl के साथ, तो ये cancel, these two are cancelled. It is present in left and right both sides of the equation, and we'll cancel it out. So what is left is 6 plus 2, 8 NH3.
3Cl2 is reacting to form N2 and 6NH4Cl. So this is the reaction. Excess of ammonia reacts with chlorine gas to form nitrogen and ammonium chloride. ठीक है, so this yellowish green color of chlorine disappears and white fumes of ammonium chloride are formed. ठीक है, तो क्लोरीन जो होता है वो येलोइश ग्रीन कलर का होता है, जो पूरा ये है धुआं है या तो फिर पाउडर जो है, एंड अमोनियम क्लोराइड इज व्हाइट इन कलर. तो ग्रीन कलर से इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाइट कलर फ्यूम्स. ठीक है, और जब क्लोरीन एक्सेस, अगर इफ यू टेक अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे इन दिस प्रीवियस केस द अमोनिया वाज इन लार्ज क्वांटिटी, but instead of ammonia, if I take chlorine in large quantity, then what will happen is ammonia will react with chlorine to form 3HCl plus NCl3. NCl3 is called as nitrogen trichloride. Okay, and this reaction is just one step, there is no other step. Okay, there is no other step जहाँ पर ये वापस reaction हो सके. ठीक है, so these reactions show that chlorine has great affinity for hydrogen. If you see over here, chlorine went with hydrogen. If you see over here, chlorine went with hydrogen. तो क्लोरीन इमीडिएटली हाइड्रोजन के साथ जाके बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है. और अमोनिया क्या करता है, इफ यू सी अमोनिया केयरफुली, दिस अमोनिया हैज एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन. ठीक है, यहाँ पे NH3 से वो NH4 हो गया, सो दिस एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, so hence ammonia can also behave like a reducing agent. Then reduction of metallic oxide, if you take copper oxide, okay, and if you heat it with ammonia, then copper will be formed. यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया. ठीक है, ऑक्सीजन निकल गया मतलब कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. ठीक है, तो hence it is a reducing agent. ऑक्सीजन को लगाने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और ऑक्सीजन को निकालने को रिड्यूसिंग बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे NH3 ने ऑक्सीजन को निकाल दिया तो NH3 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. From copper oxide I just get 3 atoms of copper, and water and nitrogen gas is a byproduct. ठीक है, तो hence we can say that ammonia reduces ammonia, it will reduce CO, heated metallic oxide. Obviously we have to heat the reaction to give metal, water vapor and nitrogen. It will give pure metal copper, it will give water and nitrogen. ठीक है, the black copper oxide is reduced to reddish brown copper. तो copper oxide is black in color and pure copper is reddish. तो ये इससे अपने को मालूम भी पड़ जाएगा. ठीक है, fine. So I'm ending the lecture over here today. Okay, tomorrow we'll continue with the remaining 3 pages. Okay.